कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए कितनी आवश्यक है। बदलती दुनिया और समय के लिहाज से यह आवश्यक है कि हम अपने लक्ष्य बदलें, नए लक्ष्य निर्धारित करें और नए लक्ष्य के लिए हमको नया काम करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सहारे हम अपने समाज को किसी भी क्षेत्र में बढ़त दिला सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं अपने समाज को। हेल्थ हो या एजुकेशन, डिफेंस हो या एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो या कम्युनिकेशन, बिना R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हम इन सेक्टर्स में एक्सलेंस किसी भी सूरत में हासिल नहीं कर सकते हैं। सरकार ने प्राय वह हर कदम उठाए हैं जो देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लीडर बनाने में सहायक होंगे। वह चाहे बैंकिंग पॉलिसी हो, चाहे वह हमारी रेगुलेटरी पॉलिसी हो, फंड उपलब्ध कराना हो, लेबर पॉलिसी हो, एजुकेशन या हेल्थ पॉलिसी हो, ताकि हमारे युवा और इंडस्ट्री मिलकर देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों पर को देश को पहुंचा सके। तो आप हमारे देश में लगातार बढ़ते हुए स्टार्टअप्स के नंबर को देख सकते हैं। मोर देन 99,000 स्टार्टअप्स, 107 यूनिकॉर्न्स हमारे देश में। हमारे यूथ के ड्रीम्स, उनका हार्डवर्क, उनका डेडिकेशन अगर क्लियरली कहीं रिफ्लेक्ट होता है तो हमारे स्टार्टअप्स की सफलता में ही रिफ्लेक्ट होता है, हमारे यूनिकॉर्न्स के ही सक्सेस में रिफ्लेक्ट होता है। हमारी इंडस्ट्री जो अपेक्षाकृत छोटी हैं, वह टेक्नोलॉजी चैलेंजर हैं, उसके पास नई टेक्नोलॉजी इजाद करने का अधिक इंसेंटिव होगा। ऐसे में मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि हमें चैलेंजर की दृष्टि से नई अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाना चाहिए। ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, और जैसे अभी रक्षा मंत्री जी ने कहा उनके भाषण में कि इंडस्ट्री को और गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इससे भारत एक बहुत सशक्त देश बनेगा। अभी भी जो 5-6 साल में जो हुआ है वो प्रगति बहुत बढ़िया तरफ से हुई है। जो हम 50-60 साल में नहीं कर सके वो हम 10 साल में करके दिखाया इंडस्ट्री ने। जैसे मैंने बोला और रक्षा मंत्री जी ने भी बोला कि डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है। तो कोई भी देश में ये डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस प्रोडक्शन ये देश को सुरक्षित बनाता है और देश को आर्थिक दृष्टि बहुत मजबूत बनाता है। और अगर भारत को आर्थिक प्रगति करनी है कि दुनिया में पहले 2-3 नंबर के देश में आना है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अमृतकाल में इंडिया शुड बिकम ए $30 ट्रिलियन कंट्री, कि पूरे सोसाइटी जो भी ये देश में रहते हैं उनका रहन सहन, उनकी लाइवलीहुड सब अच्छी तरह से बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और हमारा देश एक प्रगतिशील देश हो। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं डिफेंस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे को तो बहुत खुशी है कि ये नए पॉलिसीज़ आए हैं। इससे मैं बहुत अभिमान से कह सकता हूँ कि ये ज़रूर रिज़ल्ट दिखाएंगे और बहुत जल्दी रिज़ल्ट दिखाएंगे। एक पॉलिसी से कुछ होता नहीं है, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5-10 डिफरेंट थिंग्स एक्टिंग टुगेदर। जैसे राजनाथ सिंह जी ने बोला कि जो भी तकलीफ़ें हैं वो हमारे पास आप लेके आइए, हम उसका सुझाव देंगे। ये मेंटल एटीट्यूड जो बदली है ना, वो ही बहुत बड़ी है और हमें गर्व है हमारे डिफेंस मिनिस्टर पे कि उन्होंने he has actually taken the leadership of making the change in defense.
रक्षा मंत्री जी का जो आज स्पीच था, it is like a clarion call to industry to invest in defense. And what can be greater pride for industry to participate in defense, in indigenization, in technology, so that we can produce and be Atmanirbhar in probably the most important part of security for our own nation. But not only that, with technology, with indigenization, हम आगे निर्यात भी कर सकते हैं फ्रेंडली कंट्रीज को. ये बहुत ज़रूरी है. अब अभी बहुत कम कंपनियां हैं जो डिफेंस में पार्टिसिपेट करनी है प्राइवेट सेक्टर के तौर पे. ये बहुत बढ़ावा देना और एक पूरा सप्लाई चेन हिंदुस्तान में क्रिएट करना है कि हमारा सप्लाई चेन हमारे पास हो और हम इसको डिफेंस सर्विसेज को, अपनी आर्मी को, अपने डिफेंस सर्विसेज को पर बाहर निर्यात भी कर सकें और ट्रू आत्मनिर्भरता लाएं अपने देश के लिए. मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री जी ने CII को एड्रेस किया. बड़ी वाइड गैदरिंग थी और बहुत अच्छी तरह से ये मैसेज उनका हमने रिसीव किया है. Today's session by the Honorable Defense Minister Mr. Rajnath Singh on defense production, I think it was very, very inspiring, very explicit. I think the minister made very clear comments about the direction which defense production in India is taking. And we in the Indian industry are very delighted and really with looking forward with anticipation to be part of this new market segment which is opening up for the country. I think this is fantastic for not only the manufacturing sector in India but also for the nation, because you will save foreign exchange and you will become self-sufficient. And so this is a very, very positive move. I think a couple of things, a couple of takeaways for me from Minister's speech were that they're making ease of getting into defense production a reality, and huge focus on R&D. I mean, and I think later on the Secretary DRDO, Chairman of DRDO, Mr. Kamath also further talked about the same point. And so I think huge focus on R&D. We're looking at future technologies. So it's not simply production, it's also looking at new products, new technologies, innovation. So I think the way, I think this, to my mind, this is happening for the first time in my last 40 years in being in business, that the country is talking so much proactively and pragmatically about defense and creating India-made products for our defense area. So I think it's very interesting. I'm sure industry will respond very, very positively to this clarion call which the Honorable Defense Minister has made. And I think it was a phenomenal speech, I can tell you that. And to my mind, the industry will respond very, very positively and proactively to this. Defense sector today is probably the most vibrant and exciting sector to be in today by the private industry. The attention that this sector has received from the government in the last few years has been extremely encouraging, attracting more and more industry to this segment. The reforms which have been carried out and the focus on Make in India, the Atmanirbhar, has brought in many small industries and equally important the startups, who are involved in creating new technologies and developing new technologies so crucial for the defense sector. The session which we had today with the Honorable Minister Rajnath Singh ji was extremely motivating as always. I think his speeches are extremely motivating for the industry. And a new concept and a thought which he brought to our mind today is this idea of a technology challenger. This is something which he has framed so clearly and so well for the industry to understand. I think that makes a lot of sense, and I think it's up to the industry now to take up this challenge and take it forward. Ours is a success story. It became a success because of my interaction with CII, my interaction with SIDM, and through that I got connections
and the national requirement of the Ministry of Defense. Otherwise, it was not possible for us to get real requirement of the country. So through that, we started working with local resources, educational institutes, and then we have started developing products for subsea related systems like unmanned systems, robotics, AUVs and ROVs. With that, we entered into DRDO, with that we entered into Navy. And now we are doing very good business, and our manpower reached to around 75 people from the number of 5. This is possible because of this kind of events. Every time, whenever happen to come to this kind of program, interaction with Ministry of Defense, our Minister of Defense, and like Dr. Kamath from DRDO, he gave his futuristic requirements like net-centric warfare and cyber-related activities, and awareness of the marine domain, awareness of the aerospace domain. So these are the things I learned today. Then I'll go back and I'll start working. The projects which we have completed collaborated with US, Canada and other countries. We got ITAR license also because of the end user certificate from Government of India. These certificates are possible because of Atmanirbhar Bharata and objectives. Otherwise, there is no chance for small companies like us and remotely located away from the Delhi and Visakhapatnam, it is not possible. I am suggesting other companies to make use of this benefit and try to get into the defense business because it is meant for Indians and Indian companies. That is the advantage. If you go to other domains, your competition with MNCs. So my suggestion to the industrialists to come to this domain and work with national interest and work for the country, and you will get benefited financially and with name and fame. ये सरकार गोल्स के साथ काम करती है. Positive list, capital budget allotment, export target, all these are giving a renewed energy and a vigor. And this annual session has been highly successful with the message from the Raksha Mantri.